Everyone, this is your Rajput and back again with the most controversial question of this year, that is this great oxygenation event question. Now if you see carefully, this is not a difficult question. It's highly confusing or thoda sa common sense. That's it, nothing else. So in this question we have two statements. The first statement is Earth's atmosphere become oxygen rich around 2.4 billion year ago, and it is called great oxygenation event. The second option is photosynthetic bacteria produce the first oxygen on the earth. Now these are the two statements. According to the official answer key, A is correct and B is incorrect. And according to most of you, both the statements are correct and B is the correct explanation for A. Okay, I will give you this answer, but after my explanation. So let's go back in time, some 3 billion years ago. At that point of time, the land area, if you see, only 2 to 3% of the land is exposed, okay, at that point of time, and rest is covered in the ocean. Now, if you see carefully, here it's written that photosynthetic bacteria produce first oxygen on the earth. When it's on the earth, it can be in the ocean, it can be in the atmosphere, both. Okay, you get my point. Okay, so photosynthetic bacteria won't be in the atmosphere. Is this right? Okay, now let's see. If you go back some 3 billion years ago in Archean period, what we have? We have chemosynthetic bacteria. Those live around the hydrothermal vents. They do chemosynthesis. They use these chemicals coming out of the hydrothermal vents, and based on that, they produce food. Okay, they survive on that. At that point of time, there is no such oxygen. We know oxygen is very reactive gas. It forms oxide instantly. Metal oxides it forms. So that means a lot of metals are there in the oceans, right? And at that point of time, volcanic events is going on all around the world. Under the ocean, there are lots and lots of volcanoes. They are oozing out lots and lots of metals out of the mantle to the crustal regions, ocean skin there, right? So lots of metals are there, and since oxygen nahi tha, so that means there is no formation of oxides. No metal oxide is forming at that point of time. So under anoxic condition, our ocean looks like the green in color. Okay. Now you'll say why green in color? Like, because see, if iron is more, it looks like red, but the reddish iron is rust, and that is Fe2O3 XS2O. So in this formula, O3 is there, oxygen is there, and at that point of time there is no oxygen, right? So rust red इसलिए क्योंकि oxygen है. Laterite is red because it is having oxides of aluminum and iron, like that. So at that point of time, oxygen तो था ही नहीं, right? So the ocean looks green in color. Now what happened? Ki some of the chemosynthetic bacteria, which lives around hydrothermal vents, they somehow come to the surface, and we know ki since at that point of time, if there is no oxygen, there is no ozone layer also. So ozone layer bhi to nahi tha. Are you getting my point? Ozone layer is formed after the formation of oxygen, after this great oxygenation event that happened some 2.4 billion year ago. तो सोचो कि some of the bacteria, this is the theory, okay, कि some of the bacteria, chemosynthetic bacteria, come to the surface, and we know that that time oceans are not too deep. Even at that point of time, these oceanic landforms, oceanic crust and continental crust is in the period of formations. अभी तो बन ही रहे थे ना at that point of time. So we know that if there is no ozone layer, that means UV radiation is going deep in the ocean, right? UV radiation is having more energy than other radiations.
Right now it is blocked by ozone, but at that point of time there is no such ozone. So what happened if you go directly into the sun without this SPF 50 or 15 sun protection film, that is called SPF. Okay, so without that, if you go, tanning ho jata, right? And if you are in the sunlight for a long period of time, you will get a skin cancer called uh, melamine. Okay, this is a skin cancer disease. Okay, so at that point of time, socho ozone nahi hai. So what happened with this chemosynthetic bacteria is their DNA, they get like attenuated, उनका DNA में change आ गया, and because of this change, now they have this ability to convert carbon dioxide, nutrients and water and sunlight into oxygen and organic matter. So देखो डीएनए जो चेंज होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डीएनए चेंज. कुछ डीएनए चेंज इज गुड, कुछ डीएनए चेंज बैड होते हैं. जैसे सम 1000 years बैक जो अपना साउथ ईस्ट एशिया, उनमें डीएनए में चेंजेस आ गए, एंड बिकॉज ऑफ दैट विथ एज वो जल्दी उनमें एजिंग नहीं आती, मतलब टाइम बीतने के साथ एजिंग नहीं आती, वो बहुत दिनों तक यंग रहते हैं साउथ ईस्ट एशियन लोग. एंड इफ यू सी दिस अफ्रीकन एंड वी पीपल, साउथ इंडियन पीपल्स, थोड़ा एजिंग जल्दी आती है. सो उनके डीएनए में चेंज हो गया था. तो सिमिलरली हियर दिस कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज, their DNA get like attenuated because of this UV radiation, strong UV radiation. अगर तुमको भी UV radiation में रख दिया जाए, at that level your DNA will change. कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर. ओके, सो ये डीएनए चेंज से उनके लिए अच्छा नहीं था. Actually it's bad for them because of few chemosynthetic bacteria which come into contact with this UV radiation. उनके पास ये स्पेशल एबिलिटी तो आ गई थी, बट नाउ द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस एबिलिटी, दैट इज ऑक्सीजन, वो मारने लगा अदर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज को. बिकॉज अदर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज वो इवॉल्व हुए थे एनॉक्सिक कंडीशंस में, राइट? सो दे वांट दिस ऑक्सीजन लेस इन्वायरमेंट. बट नाउ this few organisms, the few chemosynthetic bacteria, those are like blue green algae, cyanobacteria, now they have a special ability and they have enormous food. क्योंकि see, these hydrothermal vents are, they are location specific, तो उनकी population भी कम होती थी. But when it comes to the sunlight, ये पूरे surface पर है. So you have this enormous amount of food. तो evolution क्या होगा? It will be very fast. Not Darwin's law. अगर तुम्हारे पास ज़्यादा रहे, you will grow very fast, right? तो उसका जो अब ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, that is leading to the death of other chemosynthetic bacteria. Now, यहाँ तक सब सही चल रहा है. अब देखो, these chemosynthetic bacteria when turns into cyanobacteria, blue-green algae, वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने लगे. एंड बिकॉज ऑफ दैट सडनली ओशन बिकम्स रेड. एंड अब रेड क्यों हो रहा है? बिकॉज दिस मेटल इज नाउ इंटरेक्टिंग विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स. और जब जैसे ही मेटल ऑक्साइड बनेगा, सोचो आयरन आयंस आर देयर इन द ओशन सस्पेंडेड, Fe2 plus Fe3 plus. These when interacts with the oxygen, it turns into Fe2O3, Fe3O4, hematite. समझ रहे हो? सो ये सारी चीजें बन रही हैं. फेरस एंड फेरिक ऑक्साइड के साथ जुड़ रहे हैं, ये सारी चीजें बन रहे हैं, एंड देन दे आर लाइक टर्निंग इनटू सॉलिड. नो, जैसे ही ये आयन ऑक्सीजन के साथ मिला, दिस टर्न्स इनटू सॉलिड एंड गेट डिपोजिटेड ऑन द ओशन फ्लोर. सो ये इट्स नॉट लाइक कि वन इवेंट, ऐसे मल्टीपल इवेंट्स हुए हैं. सो ओशन सैचुरेट हुआ ऑक्सीजन के साथ, it reacts with the iron, get deposited. Another again, फिर से this photosynthetic bacteria are फिर से प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑक्सीजन. अगेन इट रिएक्ट्स विद द अदर मेटल आयंस, क्योंकि the hydrothermal vents are continuously oozing out these metal ions to the ocean. So ये as a set, and that's the reason why we have
different layers. So it's not a one day process. Million of years में ये सब हुआ है. And every time the ocean gets saturated, it forms metal oxide and get deposited on the ocean floor. Okay. So this is how oxygen gets situated in the ocean. Now these oxygen are dissolved oxygen into the ocean. When the oxygen is completely saturated the entire ocean, when it completely oxidize all the metals of the ocean, अब ocean का कलर blue हो गया. From green it turns to blue, and the ocean subsurface, जो ocean का bottom है, that is having layers like this: banded iron formation, banded hematite, quartzite, BHQ, all those things are formed. अब देखो ऑक्सीजन ओशन में सेचुरेटेड है, डिजॉल्व ऑक्सीजन इज 100%. नाउ इट हैज नो एबिलिटी टू एब्जॉर्ब मोर एंड मोर ऑक्सीजन. सो अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन इज नाउ कमिंग आउट ऑफ द ओशन सरफेस and moving towards the continents. Continents are not that exposed at that point of time. कुछ 3 से 4%, 5% ही continent exposed थे. But still, those continents are having again metals, minerals which is having metals in it. तो अब क्या हो रहा है, सोचो, this oxygen is reacting with those that, and red bed ores जो हम लोग पढ़ते हैं in geology, on the earth surface red bed ores are formed due to that. ये ऑक्सीजन रिजेक्ट करता है. सो दिस सडनली बेसॉल्ट्स वेदर करके लेटराइट बनाने लगे. ऑल दोज थिंग्स, बॉक्साइट्स, लेटराइट्स, लिमोनाइट्स, जहाँ भी ऑक्सीजन है, साइडेराइट्स, हेमेटाइट्स, मैग्नेटाइट्स, ऑल दोज मिनरल्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम सिलिकेट्स बनने लगे, सिलिकेट्स ऑक्साइड्स बनने लगे, राइट. एवरीथिंग इज फॉर्मिंग राइट नाउ क्योंकि ऑक्सीजन अब फ्रीली अवेलेबल है. ओके, तो अब लैंड पर चेंजेस हो रहे हैं. स्टिल land is a part of, मतलब it's in direct contact with the atmosphere. So oxygen abhi atmosphere mein, it's not going directly to the atmosphere. All the oxygen is getting used by these metals of the minerals oxide form, because this is more reactive. ये छोड़ नहीं रहा है oxygen. And इस तरह से red bed ores बने all across the continents. And when ये भी complete हो गया, then जो भी oxygen है, it is going to the atmosphere. So this is how atmosphere में गया. And with time, अब देखो ये जो photosynthetic bacteria थे like cyanobacteria, blue green algae, what they are doing is कि they are decreasing the amount of carbon dioxide in the atmosphere and increasing the amount of oxygen to the atmosphere. खाते क्या थे वो, कार्बन डाइऑक्साइड खाते थे ना. स्लोली स्लोली CO2 डिक्रीज हो रहा है और ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो यानी उनका फूड खत्म हो रहा है. सो देयर इज दिस टाइम व्हेन इवन दीज बैक्टीरियाज वो सफोकेशन से मर गए अपने ही बाय प्रोडक्ट के. ऑक्सीजन इतना ज्यादा हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड इतना कम हो गया क्योंकि सनलाइट तो कम नहीं था, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रहा था. एट द इनिशियली व्हेन अर्थ इज फॉर्म जस्ट आफ्टर सम 1 बिलियन ईयर आर्कियन पीरियड में, उसके स्टार्टिंग में देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड इज अप टू 90%, मोर देन दैट. क्योंकि वोल्केनो से आता क्या था, जो वोल्केनो फट रहे थे उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर, these three things is going into the atmosphere. Water vapor, after certain million of years, water vapor condense किया and it turns into the water. So water vapor अब atmosphere में gases state में नहीं है, it is turning into the liquid which is all above the earth surface. तो एटमॉस्फेयर में रहा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है, मीथेन एंड अदर एनॉक्सिक गैसेस. तो अब देखो ऑक्सीजन बढ़ रहा है एंड यू विल से कि नाइट्रोजन कहां से आ गया. नाइट्रोजन इज देयर. नाइट्रोजन इज वन ऑफ द अनरिएक्टिव गैस. Unlike CO2 whose partial pressure is very high which reacts very faster with the water and turns into the carbonic acid, ऐसा सीन नहीं था नाइट्रोजन के साथ. नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करता है. So even if the small amount which is coming from the volcano, that is getting accumulated over the year and year. ऑक्सीजन ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन तुरंत मेटल ऑक्साइड बनाता है. कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा नहीं है, इट रिएक्ट्स विद द वाटर एंड फॉर्म्स कार्बनिक एसिड एज सुन एज पॉसिबल लाइक दिस. तो जो मिलियन ऑफ ईयर तक बारिश हो रहा था because of condensation of these water vapors, this dissolves carbon dioxide also. So there are two ways in which carbon dioxide is utilized. एक तो हो गया during photosynthesis, another way
Carbon dioxide is having high partial pressure. It easily dissolves into the water to form carbonic acid and then bicarbonate ion and carbonate ion like this. अब देखो एवरीथिंग इज ओके। अब क्या सीन है कि क्या इसके पहले ऑक्सीजन नहीं आता? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया द produced the first oxygen on the earth. Is it right? No. Why I am saying like this? Photosynthetic bacteria produce the free oxygen. They leads to the great oxygenation event. But क्या इन्होंने first oxygen produce किया था? No. Because at that point of time we have UV radiations throughout the earth's surface, strong UV radiation. No ozone is there. Before this great oxygenation event, no ozone is there. No, उसके पहले तो था नहीं. So this UV radiation reacts with the water vapor, and during this reaction hydrolysis हो रहा है. H2 and O2 are getting separated, but this O2 is not free oxygen. Right now we have 21% free oxygen. It is not uh, forming and taking part into some reaction. इतना जल्दी नहीं. यहाँ क्वेश्चन है पूछ रहा है फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया प्रोड्यूस द फर्स्ट ऑक्सीजन. नो, फर्स्ट ऑक्सीजन नहीं बनाया था. इसके पहले भी ऑक्सीजन बना है due to these reactions going on. This UV radiation reacts with the water vapor to hydrolyze it to form H2 and O2. But ये O2 within a second it forms metal oxide. It reacts with some other gases like this. तो इन्होंने फर्स्ट ऑक्सीजन नहीं बनाया. आज जो भी ऑक्सीजन है द क्रेडिट गोज टू दिस फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, बट इट्स नॉट द फर्स्ट ऑक्सीजन. बट अगर अब हम ये भी बोलेंगे कि इफ यू गो थ्रू रिसर्च पेपर्स, इफ यू गो थ्रू द बुक्स, टन्स ऑफ बुक्स, ये बोलती हैं कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया are the main reason behind the oxygen produced on the earth's surface. If you Google, no, you will also get कि yeah, the photosynthetic bacteria ही possible reason है for the first oxygen. First free oxygen का है. It's not the first oxygen, the first free oxygen. क्योंकि इन्होंने इतना बना दिया ऑक्सीजन is not taking part into some other reaction. तो अब देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली में इसमें हम गलत सही नहीं बोल सकते क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका उनका तरीका देखो. लुक एट द वे दे आस्क. मतलब कुछ भी. सी, ये स्टेटमेंट इज करेक्ट. इट्स करेक्ट. इफ यू सी दिस डायग्राम ओवर हियर, ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट 2.5 to 2.8, 2.4 दिया. सो इट चेंजेस book to book. Somewhere it is 2.2 also, somewhere it is 2.4 also. बट क्या यही ऑक्सीजन आया था? नो, इसके पहले भी. दिस इज ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट व्हेन द एटमॉस्फेयर, व्हेन द ओशन इज सैचुरेटेड विद द ऑक्सीजन. इट्स नॉट द फर्स्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड. साइनोबैक्टीरिया के पहले भी था, हेलोबैक्टीरिया के पहले भी था ऑक्सीजन, बट दोज आर फॉर अ फ्यू सेकेंड्स एंड यू विल गेट द एविडेंस. तुम गूगल करो, यू विल गेट देयर आर रिएक्शंस. But what I am saying is you will also get the evidence for if you Google first oxygen is produced by whom. So it's a photosynthetic bacteria only. Okay. So see, this is the question which is like highly confusing. But अगर हमको देखना हो, I will go with the official answer. And my reasons are already given. क्योंकि देखो फर्स्ट कर रहा है, अगर फर्स्ट नहीं बोलता आई वोंट गो विद दिस. उसके पहले ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुए थे. आर गेटिंग माई पॉइंट? बट दोज आर नॉट फ्री ऑक्सीजन्स. एंड उसके पहले इवन यू विल गेट nascent oxygen also. So there is a molecular oxygen and there is something called nascent oxygen. That is O. Molecular oxygen is O2. Okay. So because of these reactions going on the earth's surface, this high radiation is. और तुम इसमें ये देखो ना, there is no ozone layer. At the same time, अर्थ बनते ही मैग्नेटिक फील्ड भी अर्थ का बनने गया था. बिकॉज इवन अर्थ के बनने में के
कुछ समय बाद अपना कोर बना है, एंड वंस द कोर इज फॉर्म, देन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज देयर ऑल अक्रॉस द अर्थ, नो। तभी तो उन्होंने कॉस्मिक रेडिएशंस, ऑल दोज गामा रेडिएशंस उनको रोक रहे हैं। सो डिफरेंट लेयर्स, अर्थ बनते ही अर्थ के एटमोस्फेयर थोड़ी बन गए थे, आयनोस्फेयर थोड़ी बन गया था। सो डिफरेंट layers of the atmosphere क्या करते हैं, at each level you will like protected by some strong radiations, cosmic radiations को रोकने के लिए this magnetic field is there, ionosphere रोक रहा है, some gamma and x-ray radiation, uv radiation को ओजोन लेयर रोक रहा है। अर्थ बनते ही थोड़ी बन गया था, अर्थ बनते ही volcanism is going on, and volcanism is giving CO2, and CO2 itself is having oxygen in it. When it reacts with these kind of strong radiation, electromagnetic radiation, इनके साथ टकराएंगे, what happen, oxygen will form. So I'm not saying कि molecular oxygen will form, I'm not saying कि this oxygen will stay in the atmosphere for a long period of time, but I am saying कि हाँ ऑक्सीजन बना, nascent oxygen बना, but it is not there for a long period of time. It get reacted, it turn into something else. Okay, so this is my explanation. I hope you like it. और देखो, अगेन आई विल से कि 200 रुपए ही है। इफ यू गो थ्रू एनी एविडेंस, मेरे मेरे टेलीग्राम चैनल पर देर आर टन्स ऑफ एविडेंस। अर्थोलिक एकेडमी डिस्कशन, ये टेलीग्राम चैनल पे सर्च करो, ज्वाइन दैट चैनल, यू विल गेट टन्स ऑफ एविडेंस, जो कि डायरेक्ट ऐसे गूगल भी करोगे ना, फर्स्ट ऑक्सीजन वाज प्रोड्यूस्ड बाय, बट दैट ऑक्सीजन इज फ्री ऑक्सीजन, दैट ऑक्सीजन इज स्टे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. So this is my correct explanation about this. I hope you liked it. And here you can also see this methane, when reacts with oxygen, it forms carbon dioxide and 2H2O. See these kinds of reaction here. So yeah, that's it guys. I hope you understand.